start. Today we'll do data sufficiency, and tomorrow we will do data interpretation, and जो एक दो topics बचे we'll gloss through it because they have not been asked for last 13-14 years since the time CSAT has begun. Data sufficiency you are already familiar with, but here we want to do all of them at once because 5-6 questions each year are coming from data sufficiency, so that becomes more important topic to us than data interpretation and the rest of the topics. Earlier they used to ask data interpretation topics a lot, wherein they used to give information about anything really in a passage, and following that they had 3, 4, 5 questions. Questions like that are not getting asked. They have shifted to data sufficiency from 2019. So that is where we'll focus today. Tomorrow we'll try to cover both the topics so that Saturday's lecture, we have 3 more lectures. So Saturday's lectures, if you, as you guys requested, we can have revision lecture. कल जितना भी होता है डेटा इंटरप्रिटेशन और बाकी दो टॉपिक्स के उतना हम करेंगे क्लास में. बाकी प्लीज आप घर पे ट्राई कीजिए बिकॉज क्वेश्चंस तो वैसे भी नहीं आ रहे. इट्स ओनली अबाउट पीवाईक्यू जो भी बच्चे आप यू कैन ट्राई एट योर होम. अगर आप कुछ प्रॉब्लम आता है यू कैन आस्क, दैट इज नॉट कुछ. तो सैटरडे को हम रिवीजन लेक्चर रखेंगे, जस्ट ग्लोसिंग थ्रू द एंटायर कोर्स जो हमने पूरे कोर्स में किया है उसका एक रिवीजन फॉर्मेट में जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती है आई विल गो थ्रू देम. अदर देन दैट अगर आपको डाउट सेशन चाहिए, जैसे आप वर्कशीट सॉल्व करते हो, आपके सारे वर्कशीट्स के अगर डाउट्स है एक साथ, then we can take next week one more doubt session if you want and there you will ask only doubts. ठीक है. Booklet number this is 29. It is getting uploaded. Wait for a minute. अगर नहीं हुआ है तो data sufficiency आपको पर जैसे कि we already talked about it. It is about answering whether the given data in the statements is enough to answer the question or not. You don't have to find the answer. An answer, if you found out, it can be both affirmative as well as negative. Negative answer is also an answer. It does not have to be always a affirmative or yes answer. No is also an answer. You have to answer the question definitively. That is the most important part. No is also an answer. Yes is also an answer. But maybe is not an answer. कुछ cases में is not an answer. ठीक है. You have to definitively answer the question in either way. And answer the question as in, is it possible? Yes or no. You don't have to actually find the value. Can you answer the question? That is the crux. Some important notes. Don't waste your time finding the answer. Answer find करना important नहीं है. क्या answer find किया जा सकता है ये बताना important. That is what the question is. Usually you are given data and you want to find the answer. Now they have asked the reverse question, that is it possible to find the answer with the given set of information. Answer find नहीं करने को पूछ रहे, बोल रहे आपको. Don't assume what is not given in the statements. That is always true. जितना आपको दिया है उतना ही दिया है. Then statements could be from various topics. इस टॉपिक के लिए हमें नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया कुछ पढ़ना ही नहीं है. Whatever the questions will be based on other topics that we have studied, like mainly arithmetic. Some could be from geometry, linear equations, directions, puzzles, blood relations, etc., etc. So the questions that we get in data sufficiency are not new questions. It is just a new way of asking questions. Questions के लिए जो पढ़ना है वो हम already पढ़ चुके हैं in other topics. So whatever knowledge that we require to solve is already there with us in arithmetic, in and other topics, etc. मतलब कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर्स, एज, clocks, etc. It could be topic from LR, it could be topic from quant, anything. So it is not new to you. You already know these things, but it is just a different way of asking the questions. Then fourth, read the question very carefully and make a mental note of what is required to answer the question. Question पढ़ो and based on after reading the question just take a mental note कि क्या चाहिए मुझे, या आंसर करने के लिए मुझे चाहिए क्या होगा. ठीक है. You can then look at the given statements and we can then look at the given statements to check if the given statements
give you the required information or not. And try to eliminate options, that is always true. ठीक है, तो these are basic notes for you. Important topics या फिर pointers to revise. It's arithmetic के all topics, then linear equations. ये सबसे important है because डेटा सफिशिएंसी के अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उनमें हमने ये फैक्ट सबसे ज्यादा यूज किए. इफ यू हैव n वेरिएबल्स यू नीड n इंडिपेंडेंट और डिफरेंट इक्वेशंस टू सॉल्व देम, है ना. ये फैक्ट हमने सबसे ज्यादा यूज किया, तो दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल हियर एज वेल. n independent equations are sufficient to find out values of n variables. डेटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है, ये सफिशिएंट वर्ड यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है. इफ यू हैव n वेरिएबल्स देन यू हैव n इंडिपेंडेंट इक्वेशन, then they are sufficient to solve given question. It does not we don't require n particular only linear equations. Any n equations with given variables can do. ऐसा नहीं कि बस linear equation ही चाहिए, कोई भी n equations दे दो, no problem, but they should be different. Same equation नहीं चलेंगे मुझे. That is the only caveat here. Sample question: in which year Rahul was born? This is the question we want to answer. Statement number 1. Rahul at present is 25 years younger to his mother. Now, do we have any specific information about Rahul here? We are introducing one more variable about his mother. Here we have Rahul's age. Now we are having mother's age. So we have two equations, two variables now. How many equations we need? Two equations we'll need. Statement 1 will give us one equation, the comparison between Rahul and and his mother. We need one more equation. Let us see if the second statement gives us that one more equation. Rahul's brother, who was born in 1964, is 35 years younger to his mother. One more variable introduced, Rahul's brother, and this will give you one equation only, or two equations. Yes, second statement. What will be that equation? Huh? But this is brother as well. देखो, brother was born in 1964. A specific set of information. And what else is given? Brother is 35 years younger to his mother. So matlab mother is 35 years older. So you can directly find out mother's date of birth, correct? Or mother's year of birth, right? And you have Rahul. Definitely we have. So this is two sets of information, not one. Even though we have three variables, this gives you one set of information and this gives you two sets of information. What is that information? That Rahul was born in 1964. This is one information. Rahul's brother was born in 1964. And second information is this, that brother is 35 years younger to her mother. So matlab we have brother is equal to 1964. Then we have this Rahul is 25 years younger to his mother. So matlab Rahul is equal to mother plus 25. If I am talking about birth year, in birth year मम्मी पहले पैदा होगी, मम्मी का birth year plus 25 will give me Rahul का birth year. And we have mother is equal to Rahul का brother minus 35. मम्मी का 35 साल पहले जन्म हुआ राहुल के भाई से, because the difference between them is 35. So we have three equations, है ना? Can you find out answer? Yes. Fair enough, Ashwini. Rahul was born in 1934. That I am not interested in. I am only interested in can you answer this question with given set of information. Three equations, three unknowns I can solve. तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट से हमेशा एक ही इक्वेशन बन सकती है, मल्टीपल भी बन सकती है, बट बन सकती है कि नहीं, दैट इज व्हाट वी वांट टू आंसर. ठीक है, चलिए आगे. Next, what will be total weight of 10 poles, each of the same weight?
तो इसके लिए हमें चाहिए क्या रहेगा, एक पोल का वेट मिलेगा तो 10 का भी मिल जाएगा, करेक्ट। फर्स्ट, 1/4 of the weight of each pole is 5 kg. Based on that, can we find out weight of one pole? Yes, so this statement is enough. Second, total weight of 3 poles is 20 more than total weight of 2 poles. Total weight of 3 poles is 20 more than total weight of 2 poles. So 3 poles minus 2 poles is 20. 3 poles minus 2 poles is what? 1 pole. So this is also enough. If you have weight of 1 pole, we have weight of 20 poles. 10 poles, that is. So either statement is enough in this case. Correct. We don't want to find the weight of pole. That I am not interested in. How much was the total sale of the company? ठीक है. That is what we want to answer. First, the company sold 800 units of product A, each costing rupees 25. Here we can find out total sale of product A. We don't know if company has other sales or not, because question asks total sale. ये तो product A का दिया है. Statement 1 only gives me information about product A. So here I can find out product A का total sale, fair enough. Statement 2, the company has no other product line. Yes, both are necessary to answer. जब और कोई प्रोडक्ट नहीं है तभी A का सेल is going to be the total sale. Correct. So your answer would be both of them are needed. Next, the last Sunday of March 2006 fell on which of the date? Statement, the first Sunday of that month fell on 5th. That will be enough. Yes. The last day of the month was Friday. That is 31st. Huh? Any one of them is enough? Correct. If I don't know either of the information, still can you answer or not? You know the exact month we are talking about, na? March 2006. We know 1st January 2001 is Monday. From based on that, you can find out anything. So even if you don't have this information, then also it is fine. Then also we can answer. But this information we can answer. We can also find out the answer. Either one of them is enough. Correct. समझ रहे हो? नया कुछ नहीं है, पुराना ही है. All these topics we have already studied. On which date of the month was Anjali born in February 2004? February 2004, it is a leap year, so Anjali could be born in from 1 to 29 any date. अभी तो कुछ पता नहीं है. Next, first, Anjali was born on even date of the month. Still there are 14 options. So only one is not enough. Anjali's birth date, what is the prime number? Only statement 2 is again not enough. There are many prime numbers. 2, 3, 5, 7. Then 11 to 20 there are 4. 20 to 30, 21 to 30 there are how many prime numbers? 20 to 30? 3. There are 4 plus 4 plus 3. So 11 options if you look at statement 2 alone. But if you combine, then only one prime number is 2. So she was born on 2nd February. Correct. So you need both the statements to uniquely answer the question. Yes, correct. Good morning, Abir. Anshwini, absolutely correct. Right? Next. How is X related to Y? Firstly, Y says, I have only one brother. Is that information enough? Don't look at the first, second statement. If you look at only statement number 1, Y says, I have only one brother. Not enough. We don't know anything about relation between X and Y as of now. Second, X says, I have only one sister. Statement 2 also is not enough. Combining, is it enough? How is it enough? Then also we don't know how are X and Y related. They could be talking about completely different person.
He could be talking about his brother. I could be talking about my sister. So they don't know how I am related. We don't know that from these statements. So answer is going to be neither of them. Even both of them together is not enough. Ashwini, we don't know the relation between x and y in either of the statements or both of both the statement taken together as well. x और y कैसे y related कैसे है वो थोड़ी पता है हमें इससे. Among T, V, B, E, C, who is the third from the top when arranged in the descending order of their weights? Third from the top मतलब बीच वाला ही पूछा है. Middle one, middle person. We are arranging by weights. First statement, B is heavier than T and C is less heavy than V. Who is not the heaviest? This is the statement number one. Let us try to write it down. We have B heavier than T and C is less heavy than V and V is not the heaviest. ठीक है. Based on this information, can we find out? So these four people are going to be here, but we don't know how. So statement one alone is not going to be enough. Now they are giving C is heavier than only T. So C is heavier than only T matlab C is second from the last. T is at the bottom, C is here. Now we can have V or B. V is not in the top position, so V can be here or here. It cannot be here. But we don't know anything about where among these two positions V is going to be. हाँ तो यहाँ पे भी आ सकता है ना, हेवीएस्ट तो ऊपर वाला आएगा सबसे. हाँ. So we can be any one of these two positions. Still we don't know who is the middle person. So both the statement together are also not enough. Ashwini, कैसे enough है बताओ? हाँ वो तो पता ही नहीं, बट बीच वाला भी नहीं पता सकते ना. बस हमें पता है कि टी के ऊपर सी है और वी ऊपर ही आएगा इनके, बट कहाँ पे ऊपर आएगा सी के वो नहीं पता ना हमें. यस राइट. अच्छा ये ऐसा स्टेटमेंट है, बी इज हेवियर देन टी एंड सी. ये स्टेटमेंट है एंड यहां से दूसरा स्टेटमेंट चालू होता है. ओके अपना इंटरप्रिटेशन गलत हो गया. एंड यहाँ पे दो बार आ रहा है ना, बी इज हेवियर देन टी एंड सी. बी इज हेवियर देन टी एंड सी. हाँ तो बी भी कहीं पे भी आ सकता है. एंड लेस हेवी देन वी, सो बी इज लेस हेवी देन वी, who is not the heaviest. So V is going to be here only. Then it can become B, and then we can have rest of the E here. Yeah. Then we can find out. Correct. But both the statements are needed, na? Both the statements are needed. हाँ. Correct, correct. You are right, Ashwini. She is right. यहाँ पे and दो बार आ रहा है. Next, which word in the code language means flower? There is some code language they have given. Defula pen means rose flower is beautiful, and la quiz means beautiful tree. So based on this, can we find out what is the flower? We can find beautiful is common, right? So la is going to be beautiful. Beautiful is going to be la. Apart from that, which is going to be tree? Can you find out what is going to be flower? No. How about second statement? This means red rose flower. This means red tea. So common thing is chin. So chin is going to be red. Chin is going to be कुछ और करें क्या? Chin is going to be red. And
Pa is going to be T, but we still don't know what is flower. So we have to combine. We have to combine. Only statement 2 alone is not sufficient. But if we combine, you can compare this, and there is rose and flower common here. Still don't know, no? हाँ. समझ गए ना कैसे करना है? Both statements are insufficient because we don't know still. In a certain code, 1-3 means stop smoking, 5-9 means injurious habit. What do 9 and 5 respectively mean in that code? So there is some information already given, and then we have to look at the statements. Fine. 1, 5, 7. क्या common है? 1 and 5 are common. 1 from here, 1 from. If you look at this and this, only one is common, and it is 1 is going to be stop. So 3 is going to be smoking. And here, if you compare here and here, injurious habit and stop bad habit. So 5 is going to be habit. 1 is going to be stop. This is going to be habit. 7 is going to be bad. 9 is going to be injurious. Can you find out 9 and 5? Statement 1 alone is enough. Correct. Common क्या देखना है बस? Simple question है. How about statement 3? Statement 2 alone. Smoking is injurious. Here we have 3 common. We know what is 3. So we know what is 1. Here we have 9 common only. So we know what is 9. We know what is 5. So again, statement 2 alone is also enough. Either statement is enough. Either statement is sufficient. ठीक है? Correct? Next. What is shortest distance between Devipur and Durgapur? First statement, Durgapur is 20 kilometers away from Nagpur. Devipur is 15 kilometers away from Rampur. So Rampur common hai. We can have Rampur at the center. Durgapur is going to be somewhere on this radius, on this circle. Anywhere, in which some direction, koi bhi direction mein, it is 20 kilometers away. And second, Devipur is 15 kilometers away. Devipur is somewhere on this circle. So can you find out exact distance between Devipur and Durgapur? No, it can be anywhere on these circles. यहाँ पे दुर्गापुर हो सकता है, यहाँ पे देवीपुर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ anywhere it can be. We cannot find out the straight line distance, shortest distance definitively. Same question UPSC में आया एक बार, हमने किया भी है वो क्लास में. Yes. तो don't only think that this distance मतलब linear, एक ही लाइन में तीनों है, वो दिया नहीं है. What is not given is not given. If Rampur, Devipur is 20 kilometers, Durgapur is 20 kilometers away from Rampur, it means it is somewhere on this circle. Not कि एकदम straight line में, मतलब कि Durgapur, Rampur and वो straight line में है. That we don't know. ठीक है? Next, Vinod and Javed's salaries are in proportion 4:3 respectively. So there are two people, Vinod and Javed, right? Two people meaning their salaries are two variables. One equation we already have. How many more equations we need? One more equations. हाँ हाँ, तो one more we need ना. क्या दिया है? Vinod salary is to Javed salary is equal to 4/3. This is already given. हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है. We don't know that. कुछ भी हो सकता है. Now, first statement, Javed's salary is 75% that of Vinod's salary.
Is this another equation? Carefully देखो. Will it give any equation? Yes. Will it give any different equation? Same equation. What is this? This information is basically Vinod is to Javed is equal to, or Vinod by Javed is equal to 4 by 3, right? Or Javed is equal to 3 by 4 Vinod. And this information is Javed's salary is 75% of Vinod. 75% is what? 3 by 4. 75 by 100 or 3 by 4. Same equation. We cannot solve. Please carefully देख लेना ये equation same तो नहीं है. ठीक है. So statement 1 alone is not sufficient clearly. Second, Javed's salary is 4500. That is a different equation. And then we can find out Vinod's salary. No problem. Right? So here statement 2 alone is sufficient. समझ गया कैसे देखना है? एकदम carefully देखना है कि does it give you a different equation or not? Next, how many New Year's greeting cards were sold this year in your shop? I am asking some shopkeeper this question and he has to answer. First, last year these many cards were sold. Can we find out anything about this year's cards then? No, statement 1 alone is clearly insufficient. Second, the number of cards sold this year was 1.2 times higher that of last year. Alone is not sufficient because I don't know how many were last year. But if you combine, yes, I have last year information, I have relation between last year's card sold and this year's card sold. So I can find out this year's card sold. Clear? कोई problem है इस topic में? न, हाँ 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 1 नहीं है. इसे सॉल्व नहीं हो सकता ना ओनली 1 से. हाँ हाँ बिल्कुल. कोई भी प्रॉब्लम. There is nothing new as far as knowledge is concerned. We already studied all those things. It's just a new way of application. ठीक है. We just have to comment on whether it is possible to solve the question that they are asking or answer them definitively. ठीक है. Now we have PYQs. Past few years, many PYQs have been asked. I will give you 10 minutes. You solve 5 PYQs. ठीक है. थोड़ा टाइम का प्रेशर भी बना रहे आप पे. Let us see how many you get. करे स्टार्ट टाइम. हाँ हैंडआउट नहीं है. ओह ओके. तो ऐसे ही करें. When handouts come, then we can start the time. या फिर ये क्वेश्चन 2 मिनट में कर लो. 2 मिनट का टाइमर तो लगा ही सकते हैं. क्वेश्चन तो दिख रहा है आपको. स्टार्ट.
क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, देखो बेसिक क्वेश्चन है एकदम। अभी तक हाँ सही आंसर तो आया नहीं मेरे पास। 15 seconds। अश्विनी, व्हाई इज देयर क्वेश्चन मार्क आफ्टर योर आंसर? पूछ रहे हो आप, बता रहे हो। ओके, टाइम अप। हम्म। ऑप्शन को छोड़ो, तुम आंसर तो बताओ। स्टेटमेंट टू इनफ है? पक्का? पक्की बात है? हाँ। सेकंड इज इनफ? आर यू श्योर? स्टेटमेंट वन इज ऑल्सो नीडेड, देन यू कैन आंसर। आर यू श्योर? आर यू श्योर? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इज पी ग्रेटर देन क्यू? वी वांट टू टेल comparativeness between p and q. This is CSAT 23 by the way. First statement, p into q is greater than 0. What does it mean? When is p into q greater than 0? Multiplication of two things greater than 0. When either both of them are positive or both of them negative. So we don't know comparativeness from statement 1 alone. Clearly we know either both of them are positive or both of them negative. Negative into negative is positive. Correct. That is all. Second statement, p square is greater than q square. Correct. What do we, can you tell me, can we really comment anything about the comparison between p and q then? Using p square greater than q square, can we comment about relative size of p and q? Hmm? Hmm? With ये given है here, p square का square root क्या हो सकता है? What can be square root of p square? What can be square roots of p square? Square roots of p square. It can be plus minus p. For example, if I tell you that 25 is greater than 16, then we can have p as plus 5 or minus 5. Square root of 25. Square root of 16 we can have plus 4 and minus 4. If this is the pair, statement 1 alone can give us that multiple 4 options. If you combine both the statements, it will give you either this choice or this choice, both positive or both negative. If you take both positive, this is the sign. If you take both negative, can we comment who is greater? No. कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, बोथ भी नहीं, मतलब इससे क्या पता चलेगा दोनों निगेटिव है दोनों पॉजिटिव है? तो कुछ बोल नहीं सकते ना। एकदम बेसिक अरिथमेटिक का क्वेश्चन है ये। So answer is both the statements are not sufficient. It is D. Because we don't know if these numbers are negative, positive, hot. Right? -5 छोटा होता है -4 से, ये याद है ना? जो इस साइड जितना ज्यादा वो उतना छोटा। So answer is D. Simple है। Very simple, very obvious. But again you got confused. जब भी स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस दोनों कंसीडर करोगे। If nothing is said, you have to consider both the roots. Yes, did you guys understand? Ashwini, Abir, Ajinkya. Yes. Again, this is CSE 2023. डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन। हाँ ना, कमिंग टू ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस में प्रॉब्लम हो रही है क्या? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैनॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। मतलब
कोई एक स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है पर दूसरे से नहीं आएगा, अकेले से। ये तो इंग्लिश है। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ दोनों भी इसमें कवर हो जाता है। हाँ हाँ, तो ये आंसर होता। बी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, दोनों से भी अकेले से आ सकता है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। दोनों साथ में चाहिए, अकेला नहीं आ सकता आंसर। लास्ट, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ये तो क्लियर है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वी हैव डन दिस क्वेश्चन अर्लियर, सो यू हैव 1.5 minute। स्टार्ट। जैसे एक बार सोचो, हमने सॉल्व किया ये क्लास में। वी हैव सॉल्व दिस इन क्लास। यस, टाइम अप। अबीर, अजिंक्य, यस, आपका आंसर क्या? व्हाइटनर, हाँ। ए। ए और बी पढ़ रहे हो ना अच्छे से? दे आर लुकिंग लाइक सिमिलर बट नॉट सेम। ए और बी पढ़ लेना अच्छे से। इसका मतलब है कि बस एक ही स्टेटमेंट से सॉल्व हो सकता है कोई तो। इसका मतलब है कि कोई भी दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट से सॉल्व हो सकता है। चेंज कर लिया। लेट्स लेट्स कम बैक। वी हैव 5 चिल्ड्रन and their ages are A, B, C, D, E. So we how many variables we have? 5 variables. These people, these children's ages. We are given this A less than B less than C less than D less than E, and two successive ages differ by 2 years. मतलब this difference is 2. Correct. Basically, B minus A is 2, C minus B is 2, D minus C is 2, D minus C is 2, and E minus D is 2. How many equations we have? How many more we need? One equation we need. One equation that is different from this. 4 already given in the statement. तो इसका पार्ट ही नहीं है ये स्टेटमेंट्स का। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। क्वेश्चन इज व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, मतलब किसी का भी निकल जाएगा तो सबका निकल जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है ना सलवा? इफ यू फाइंड आउट एज ऑफ एनी चाइल्ड, ऑल द अदर चिल्ड्रंस एजेस विल बी डिटरमाइंड। Statement 1, age of eldest is 3 times the youngest. Does this give me another equation? E is equal to 3a. It is different equation, new equation. Is it sufficient? Yes. 4 equations I already have, na? I need only one equation. There are 5 variables, 5 childrens. 4 equations I already have. I need only one more. This will give me one more equation.
नहीं, डिफरेंट बनना चाहिए इससे। हाँ तो बिल्कुल। क्या लागू? हाँ, तो वो डिफरेंट है ना इन सारे इक्वेशन से। यहाँ पे क्या इक्वेशंस बन रहे थे, ये ना, दिस इक्वेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस इक्वेशंस। फोर इक्वेशंस इज गिवन इन द स्टेटमेंट, ओरिजिनल स्टेटमेंट। हाँ अलग है, बस सफिशिएंट, काफी है। यस, so statement 1 alone is enough. How about statement 2? Average age of all the children is 8 years. Average is sum into sum divided by number. So all sum of all the people, a plus b plus c plus d plus e divided by 5 is equal to 8. Another equation, sufficient. This is also sufficient. So answer is going to be, हमने ये सॉल्व किया है पहले, आप भूल गए हो। आपको कौन से नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा था? फर्स्ट से? अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लग रहा था? अच्छा, यश, which equation were you thinking that this is not possible to solve? आपका यही आंसर था ना? तो कौन सा इक्वेशन, कौन सा स्टेटमेंट आपको सफिशिएंट लग रहा था, कौन सा नहीं लग रहा? हम्म, पर दोनों इक्वेशन बनाएंगे ना, दो टू स्टेटमेंट्स। yes, there will be two different equations than these four equations we already had. So either statement is sufficient. That was the answer. Again, was it a difficult question? हमने ये बहुत बार किया पहले, that n equations, n variables will need n equations, n independent equations. Four already we had, we only needed one. Either statement could give us one equation, right? Solve करने की जरूरत नहीं थी equations भी। क्लियर सेल्वा? पक्का? अगेन सीएसई 2023 का ही है ये अभी। अनदर क्वेश्चन फॉर सीएसई 2023। ये हमने किया, याद है? ये काफी टाइम लगा था, करना है फिर से अटेम्प्ट, बिकॉज दिस इज नॉट रियली डेटा, दिस इज डेटा सफिशिएंसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट थोड़ा सा जो सेट्स हमने पढ़ा ना, उसका एप्लीकेशन है। कर लो, आई विल गिव यू लिटिल मोर टाइम, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप यू रिमेंबर द आंसर एज वेल। एनी प्रोग्रेस सेल्वा?
Draw the figure at least. Any progress? हमने किया था ये क्वेश्चन, किया तो था ही. There are people who drink tea, coffee and milk, right? Each person takes at least one drink. मतलब there is no people outside these three circles: tea circle, coffee circle, milk circle. No one taking milk takes tea. There is no intersection between milk and tea. Correct. So diagram is something like this. This is tea, this is milk, and this is coffee. Correct. We have 75% taking tea, 60% taking coffee, and 15% taking both tea and coffee. So there are 15% here. How many people then are here? Only tea. 75 minus 15, 60. Here we have 60 minus 15, matlab total here. If we have x here, then we have 45 minus x here. Because total there are 60 people. 15 are here. So the region outside this is 45. If this is x, then this is 45 minus x. Yes, this is the information given. What we want total number of people that attended the party. Correct. So let me call this y sum. People who drink only milk. So what is the answer we are looking for? Addition of all these things. 60 plus 15, 75 plus 45. कितना होता है? 120. 120 minus x plus x. So 120 and plus y. So I want answer for this. 120 plus y. This is the number of people who totally attended the party. So I just want y basically. Correct. First statement. 50 persons took milk. Basically x plus y is equal to 50. Based on this, can we find out y? How? Huh? No, but we don't know the value of y, na? One equation, two variables. We want the number. Can we answer? It can be anything. So statement 1 alone is not sufficient. Now statement 2 alone, let us look. Number of people who attended the party, this is 5 times the number of people who drink milk only. Why? One equation, one variable we can solve. We can find out value of y and thus value of 120 plus y. I wanted value of 120 plus y, no? We have
number of people who attended the party, that is 120 plus y, is equal to 5 times number of people who take only milk. So y, 5y. So here I can find out value of y, and that I can put in 120 plus y to find out answer for this. Answer is not important. Yes, yes, definitely we have solved this. In linear equations, we have solved this. So answer is statement 2 alone is sufficient. मिटा दूं? नेक्स्ट अगेन सीएसई 2023 देख रहे हो कितने क्वेश्चन आए इस साल. टाइम स्टार्ट्स नाउ. दिन तो क्या है सर? टाइम अप. ए योर आंसर इज. व्हाट इज योर आंसर? ए ना? हाँ, तो दिस इज it can be answered using one of the statements alone but cannot be answered using other statement. That is what you are saying. You are saying D. समझा नहीं. We have a 3-digit number. Consider a 3-digit number. Question is what is the number? वो नंबर हमें बताना है. 3-digit है, वो given है. ठीक है. Statement 1 alone. Let us see statement 1. So how does 3-digit number look like? First statement, sum of the digits is equal to the product of the digits. So correct. Second, the number is divisible by sum of the digits of the number. So this sum constant into तो स्टेटमेंट 1 अलोन से कुछ पता चलेगा. Even if you find out some XYZ like that, you can always reverse them or arrange them in any order and you'll get the still same number, or no?
See, x plus y plus z, this is x y z मतलब x into y into z है, ये 3 डिजिट नंबर नहीं है ये, x into y into z. Even if you get, for example, 1 2 3 6 6, 1 2 3 is satisfying first equation, but so is 2 1 3, so is 3 1 2. Can you find the number using just this? If 1 2 3 is satisfying this, number 123, so is 213, 213. 2 plus 1 plus 3 is equal to 2 into 1 into 3. So can we answer the question? What is the 3-digit number? It can be any of the 6, na? Right? So from that we can't comment on anything. Correct. But can we say that from statement 1 that only possible combination is 1 2 3? कुछ और बोला जा सकता है ऐसा? That बस 1 2 3 ही ऐसे डिजिट्स है कि जो ये सेटिस्फाई करते हैं, ये बोला जा सकता है क्या? कोई है और कोई? कौन है? देखो, थोड़ा सोचो. हाँ 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 हाँ. 3-digit number मतलब these are single digit ना, x y z are single digits from 1 to 9 or 0 to 9, whatever you can say. पहले स्टेटमेंट 1 पे कॉन्सेंट्रेट करो. लेट अस फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टेटमेंट नंबर 1 ओनली. स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है? इफ द नंबर इज दिस देन दिस इज ट्रू. अगर ऐसा टाइप का नंबर है तो ये ऐसा है, ये ट्रू है. सम ऑफ द डिजिट्स इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. ठीक है. नाउ ऐसे कौन से नंबर है क्या? कोई 1 2 3 तो है. 1 plus 2 plus 3 is 6 and 1 into 2 into 3 is 6. So 1 2 3 is such a xyz का triplet. Is there any other combination which satisfies this property? For example, let us go one step beyond 1 2 3 and go to 2 3 4. 2 into 3 into 4 is 24, and these are single digits. These are single digits. So maximum sum of the 3 digits can be 9 into 8 into 7 is 24. 9 plus 8 plus 7 is 24. 24 को ऊपर वैसे भी ये नहीं जा सकता सम. समझ रहे हो? Correct. So if you take 2 into 2 3 4, this is not going to be satisfied. Let us consider some other possibilities. 1. Now let us, instead of 2, let us take 3. 1 3 4. 4 plus 3 plus 1 8. 4 into 3 12. Product will always be bigger. Huh? देखो मतलब 1 into 3 into 5 9, and this is 15. 1 4 5 20, but sum is 10. So sum is always going to be less क्योंकि प्रोडक्ट बहुत जल्दी बढ़ता है. Basically, what I want to conclude here is that only triplet that satisfies this is 1 2 3. So according to first statement, if the first statement is, what does this first statement give me? That this number xyz has to be only among this. One, two, three in some order. Correct. Correct. So according to statement 1, we have 6 possibilities. So have we answered the question? Can we answer the question uniquely? What is the number? No, we have 6 choices. कोई भी चलेगा.
Now let us see what statement 2 says. Statement 2 says that number is divisible by sum of the digits of the number. If you look at this statement standalone, then there are multiple possibilities, है ना? जैसे कि 300 है, 600 है, कितने सारे हैं? There are many numbers that will satisfy this. So statement 2 alone is never going to be sufficient. But how about statement 2 with statement 1 together? Statement 1 gave us these 6 choices. Out of these 6, if you take sum of the digits, what is sum of the digits? It is 6. How many are divisible by 6? If number is divisible by sum of the digits, if second statement is also true, then this has to be divisible by 6. This is not divisible by 6. Odd number तो पहले हटा देता हूं मैं. They are not going to be divisible by 6. Now, out of these two, which are divisible by 6? Both. So still we have two choices. So answer cannot be determined uniquely. दोनों कंबाइन करें तो दो ही चॉइसेस बचते हैं वैसे, बट स्टिल एक नहीं बचता. करेक्ट. इतना ही दिया है ना क्वेश्चन में. हाँ, अब इस पे डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते आप लोग, क्या ही किया हमने. बट इट इज क्वाइट अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आवर बेसिक नॉलेज. दैट इज व्हाई पीपल आर फेसिंग डिफिकल्टी. तभी चैलेंज वही है ना कि सही क्वेश्चन चूज करना. अब ये क्वेश्चन में माथा फोड़ के कोई फायदा नहीं है. हाँ, अब टेक्निकली देखा जाए तो कुछ है नहीं इसमें, टफनेस कुछ नहीं है ना? सारे मिल गए. तीनों मिल गए. चलो, अपलोड भी हो चुके ना सर. ओके, गुड. ठीक है, नाउ दैट यू हैव बुकलेट्स, आई विल टाइम इट. कितने क्वेश्चन करोगे एक साथ? 5 करोगे? 5 क्वेश्चन एक साथ करो. मार्क कर लो कौन से क्वेश्चन करने हैं. पहले ये सीएसई 2023 से स्टार्ट करना है. आई विल गिव यू 10 मिनट्स. थोड़ा अटेम्प्ट करके देख लेना, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है प्लीज मूव अहेड. ठीक है? ट्रीट इट एज इफ इट इज एन एग्जाम. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5 questions and I'll be back in 10 minutes.
Yes, 10 minutes over. How many did you do? हो गए सारे? Yes, 2 हुए. 4. अश्विनी, अजिंक्य 6. 5 ही बोला था मैंने. अजिंक्य 5. लेट अस सी कितने सही हुए. फर्स्ट ये किया है. व्हाट इज द आंसर? अच्छा, किया है? अच्छा, is p plus q minus r greater than p minus q plus r, where p q r are integers. So we want to compare this p plus q minus r to p minus q plus r. ठीक है. Statement first, p minus q is positive. Basically p greater than q. First statement ये बोल रहा है. First statement. And second, p minus r is negative. So p uh, less than r. If statement number 1 alone is true, if statement 1 alone is true, statement 1 alone is true, then we have this as a positive number. P minus q is some positive number here. P is greater than q. And that positive number plus r is right hand side. And here we don't know how much that r is. And here we have p plus q minus r. Alternatively, what you can do, what we want to compare, p q can cancel. And bring p minus q था ना ये. Bring q on one side, r on one side. So we have 2q and here we have 2r. So we want to compare q and r. है कि नहीं? मैंने क्या किया, ये है. I can cancel p from both the side. दोनों पॉजिटिव में है ना. I can cancel both of them. And this minus q I can bring here. It will become plus q. So q plus q is 2q. And this minus r I'm sending that side. I'll get 2r here. So 2 I can again cancel. So q and r. I want to compare q and r. From first statement alone I cannot compare. From second statement alone I cannot compare. But what if I combine? Then can I compare? P is greater than q, but p is less than r. Can I compare r and q? Yes. So both statements are required. वही आया था आंसर. ऐसे किया था. हाउ डिड यू डू इट? ऐसे कैसे कर रहे हो? जस्ट अगेन सीएसई 2023. ये अच्छा. हाँ, वी हैव सॉल्व्ड मेनी क्वेश्चंस थ्रू आउट. आई मीन जहां पे भी लगा था. बट इजी क्वेश्चन. अगेन सीएसई 2023 है. इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट पेपर. हाँ, अब ये इसमें क्या है यार? इतना बेसिक चीज किया हमने, 4 लाइन में आंसर भी आ गया. ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया हमने. हम्म. हाँ, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन. We have given statements. Question is, how many of the above statements are required to determine the oldest person or persons? सबसे बड़ा कौन है?
and option is 2, 3, 4 and 5. All 5 are required. Acha. Why? See, you can do like this. This is the only information about E. So that will be required. Then, yes. Here we get comparison of AB, here AF, and here FD, here CD. Of course, all are going to be required. हाँ. 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 तो आंसर किया कि नहीं? आंसर अफर्मेटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. डिड वी आंसर और नॉट? आंसर है नो. If I used both the statement, answer is no, but that is an answer. No is also an answer, ना? आंसर करना है. आंसर कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव. ओके, गुड. अश्विनी बोल रही है कि नाउ concepts are clear, so paper does not seem as difficult as it seemed earlier. Do you feel the same way, Silva? That after the course, paper does not seem as difficult as it seemed earlier. थोड़ा पास ही होना. नहीं नहीं, 67 एकदम एच पे क्यों पास होना है यार. थोड़ा 80 तक ले आओ ताकि वो दिमाग में ना रहे वो जो रिजल्ट तक. The first 15-20 days wait till result. That should not get wasted. That am I getting passed? Am I not? Am I getting passed? Am I not? 4-5 क्लासेस के आंसर की लेके बैठ जाओगे जिसमें आपका वाला आंसर दिया होगा वो अच्छा क्लास है उस क्वेश्चन के लिए, तो किसी और क्वेश्चन के लिए कोई और अच्छा क्लास है. ये सब करते मैं नहीं बैठना है. बिल्कुल बिल्कुल. Assume that you are passing and start preparing. There is no other option. हाँ, नहीं तो उस दिन डिसाइड कर लेंगे. उस दिन मतलब देख लेंगे जो भी होगा. चेंज तो कुछ होता नहीं इधर. Once you submit the answer sheet, it's over. There's nothing you can do. Okay, so this question answer is all 5 are required because information is very scattered. Next. अच्छा, all 4 से आ जाता है आंसर. चलो, you got something different. All 4. Okay. What is the relation between A, E and B? Right, right. So E के बारे में इंफॉर्मेशन है वो तो चाहिए रहेगी, but E is related to D. So D के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी. C is related to A. This information is required, and A is related to B. So this information is going to be required. All 4 information is going to be required. Next. किया है. This is now 22. Didn't understand? Question is X an integer? एकदम फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट डे 1 का क्वेश्चन है. अरिथमेटिक का फर्स्ट क्लास जब हमने नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स पढ़ा था. अटेम्प्ट किया है. डिड यू अटेम्प्ट? 5 क्वेश्चन हो गए क्या हमारे? मनीषा 5वां है, ये 4th है. हाँ, इज एक्स एन इंटीजर? दैट इज व्हाट वी वांट टू आंसर. फाइन फाइन. x by 3 is not an integer. And can we say that x is an integer? x by 3 is not an integer. इससे हमें ये पता चल सकता है कि x इंटीजर है. फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रैक्शन ले लो, उसको 3 से डिवाइड कर लो. इफ यू आर स्टिल गेटिंग नॉट एन इंटीजर, नहीं कर सकते कुछ बात ऐसे. You can have an integer like for example 2. This is not an integer, but 2 is an integer. Fair enough. Let me take a fraction 1 by 3 divided by 3. X by 3. X by 9, not an integer. Still
नॉट एन इंटीजर, बट इज एक्स एन इंटीजर हियर? नहीं, एक्स ये लिया ना मैंने अभी, x by 3 है ये. X I took firstly 2, then I took x as 1 by 3. Here x by 3 was not an integer but x was integer. Here x by 3 was not an integer but x was also not an integer. So based on this we cannot claim anything. So statement 1 alone is clearly not sufficient. Statement 2 alone, 3x is an integer, then can we say that x is an integer? Huh? If 3x is an integer, can we say that x is an integer or x is not an integer? Again same ले लो, चलो 2. Let us first take 2, then we'll take 1 by 3. 2 into 3 is an integer. Yes. So 2 is also an integer. But 1 by 3 into 3 is 1. It's also an integer. But 1 by 3 is not an integer. So again, we cannot comment anything based on statement 2 alone. है ना? 3x is an integer, ये given है. मैंने पहले x लिया 2, फिर x लिया 1 by 3. 3x इस केस में 3x क्या है? If x is equal to 2, integer है. हाँ. And 2 is also integer. X is also integer. But in this case, x मैंने लिया 1 by 3. What is 3x? Integer. But is x integer? So can we comment anything? No. Let us now combine both the statements. Both the statement together वाला भी तो option है. 3x also integer, x by 3 is not an integer. यही है हमारे पास. Same examples. 3x integer है. 1 x by 3 integer नहीं है. x by 3 is 1 by 9. So we cannot comment using together as well. 3x integer है. x by 3 integer है. x by 3 integer नहीं है. But x integer है. So using only these two values you can comment on everything. कि नहीं है sufficient. Answer is D. If 3 हाँ नहीं है ना sufficient. नहीं है, नो भी तो नहीं आंसर. ये देखो x इक्वल टू 2 ले लो. वहां पे हम डेफिनेटली बोल पा रहे थे कि आंसर नो ही है कुछ भी केस में. यहाँ पे कुछ भी बोल नहीं पा रहे. x इंटीजर है भी नहीं बोल पा रहे, नहीं भी बोल नहीं पा रहे. यहाँ पे देखो ये x मैंने अगर 2 लिया तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, और x इंटीजर भी है तो यस भी आंसर है. इस x के लिए भी वो ट्रू है तो x नो भी आंसर है. इंटीजर यस भी है, नो भी है, कुछ बोला नहीं जा सकता. अगर हर केस में नो आता तो बोल देते पॉसिबल है आंसर करना. हाँ नहीं, वैसा भी केस नहीं है ना. This will be true for integers as well, non-integers as well. So we cannot claim anything about x being integer or not. Again, another easy question. Easy था नहीं था? नहीं था. In general, we know that sum 3 into x अगर इंटीजर है इसका मतलब ये नहीं कि x इंटीजर ही होना चाहिए. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 2 by 3, 4 by 3. 4 by 3 into 3 will be 4. It's an integer, but 4 by 3 is not an integer. But इंटीजर के लिए तो ट्रू ही होगा वो. 2 into 3 तो इंटीजर है तो 2 भी इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम. So we cannot say anything. Similar is the story for x by 3. Yes, एकदम बिल्कुल बेसिक है ये. नहीं, जीएस में तो ऐसे नहीं आ रहे. हाँ, जल्दी था बस जल्दबाजी कर दी. ओके. GS is becoming more and more complex, I think. This again we have done multiple times. Last के लेक्चर में भी किया था हमने शायद. इसका आंसर भी याद होगा आपको. सी आंसर. इसका आंसर सी है. We have two variables, two equations बनते हैं इससे, and we are through. कितने सही आ गए फिर? हम्म.
Manisha wala chose. Okay. Selva, how many did you get right? Okay, fine. That is good. मतलब you are in quite a comfortable position that way. पास हो जाओगे आराम से. ठीक है. Start getting that confidence कि पास हो जाएंगे. पास तो हो जाएंगे. 150 नहीं आएंगे कोई बात नहीं. लाने भी नहीं है. हम्म. डेफिनेटली डेफिनेटली. फर्स्टली हमें अपना अटेम्प्ट 40-45 तक विद डिसेंट एक्यूरेसी ले जाना है. उसके बाद टाइम बचा तो कर लेंगे. नहीं बचा तो घर आके कर लेंगे. बिल्कुल. पैसेज का यार नेचर ही वो है. हम्म. तो रहता ही है मतलब. हाँ हाँ बिल्कुल. अगेन टाइम का थोड़ा देख लेना बस कि ऐसा नहीं करना कि पैसेज 1 घंटे तक पैसेजेस कर रहे हो. बिकॉज देन अदर कर नहीं पाओगे. उतने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो करने ही है ना वो. तो अगर पैसेज 25 क्वेश्चन 1 घंटे में कर रहे हो तो बाकी 20-25 क्वेश्चन तो नहीं होंगे 1 घंटे में. वही इसलिए पैसेज लिमिट योर सेल्फ टू 40-45 मिनट मैक्सिमम. जितने भी हो रहे हैं उसमें मतलब एटलीस्ट 20 तो करने ही है. 20 के अबाउ जितने भी हो रहे ठीक है. दैट इज माई रिकमेंडेशन अगेन इफ यू फील लाइक कि नहीं ये सही नहीं है. आई वॉन्ट टू अटेम्प्ट ऑल द पैसेजेस एनी वे. हाँ हाँ बिल्कुल. 150 लाओगे तो गिफ्ट तो है. बट हाँ पैसेजेस का वही है कि अगर आपको फिर भी लगता है कि यार 27 के 27 अटेम्प्ट तो करने ही चाहिए मुझे. पैसेज मेरा स्ट्रेंथ है. तो दैट इज योर कॉल. माई रिकमेंडेशन इज जनरल फॉर everyone. It is general recommendation. For specifically you can adopt या फिर amend your strategy accordingly. कंपटीशन से आउट क्यों हो रहे हो? कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेशन फी थोड़ी ले रहा हूँ. 150 का ट्राई तो कर. नहीं हुआ तो नहीं हुआ. देयर इज नो पेनल्टी फॉर नॉट गेटिंग वन. हाँ नहीं नहीं. 150 का चक्कर आप क्यों रखोगे मतलब. गोल अच्छा बड़ा रखोगे तभी तो मिनिमम पहुंचोगे. गोल ही तुम्हारा है कि यार 600 रैंक आ जाए तो रैंक नहीं आ रहा. गोल हमेशा रैंक 1 आने का होना चाहिए. तब जाके कहीं रैंक लिस्ट में जाने के चांसेस बनते हैं. मतलब 1 आने का गोल है आपका तो उस हिसाब से आप एफर्ट लोगे. व्हाई नॉट. किसी ना किसी को तो रैंक 1 लाना ही है. व्हाई नॉट यू. हाँ. तो उस हिसाब से मेहनत करोगे तो पहुंचने के चांसेस बनते हैं कहीं ना कहीं. पहले ही आप बोलोगे यार 600 रैंक आ जाए तो भी ठीक है 400 आ जाए तो भी ठीक है. वो तो मतलब डिफिटिस्ट एटीट्यूड स्टार्टिंग से क्यों रखना. हाँ. वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ ये भी हमने किया है. वी हैव डन दिस क्वेश्चन. अटेम्प्ट इट वेरी इजी क्वेश्चन. टाइम स्टार्ट्स नाउ. यू हैव 1 मिनट. इजी क्वेश्चन है इसलिए 1 ही मिनट है. क्वेश्चन पढ़ो ना.
कॉमन रॉन्ग आंसर. क्वेश्चन, if n is unique natural number between 10 and 20, then what is n? n is between 10 and 10. हाँ, आंसर बता नहीं सकते हो आप. दो पॉसिबल आंसर्स है ना, तो आंसर बता नहीं सकते हो यूनिकली आप. कहां आ रहा है नो? नो का आंसर है. नो का आंसर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा. हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन ही अलग है. क्वेश्चन यस नो पूछ रहा है क्या तुम्हें? क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर कौन सा है. कैन यू टेल दैट नंबर? नहीं, कुछ भी हो सकता है. दो पॉसिबिलिटीज है. क्वेश्चन आंसर यस नो है ही नहीं. क्वेश्चन का आंसर है नंबर बता दो भाई. तुम बोल रहे हो बता ही नहीं सकते यार. दो चांसेस है, दो पॉसिबिलिटीज है, ऐसे यूनिकली बता नहीं सकता मैं तुम्हें. समझ गया? पक्का? सेल्वा, व्हाट इज द रॉन्ग? व्हाई डिड यू गेट इट रॉन्ग? हाँ, so first statement says n is prime number. So if we have 10 and 20, we have four options. So statement one alone is not enough. There are four choices. Second, n leaves remainder 1 when divided by 4. So it is 13 or 17. 4n plus 1 types. If you combine them together, still you have 13 and 17. So two options. So we cannot answer uniquely. So answer is D. Either 13 or 17. अगर आप यूनिकली बोल सको कि आंसर नो है भाई, नो, देन ओनली यू कैन मार्क सफिशिएंट. नहीं, क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड करेगा ना. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर. अब इसमें यस नो आंसर ही नहीं है, तुम्हें नंबर बताना है ना. बट अगर मैं पूछूं कि इज एक्स एन इंटीजर, इसमें यस इट इज एन इंटीजर और नो इट इज नॉट एन इंटीजर. क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड करेगा वो. हाँ हाँ, ये पूछ रहे व्हाट इज द नंबर, तो नंबर बताओ ना. यस नो नहीं बताना है अभी. इज एक्स एन इंटीजर, यहां पे अब यस नो बता सकते हो. इज p माइनस क्यू ग्रेटर देन जीरो, इज p ग्रेटर देन q, यस या नो. यहाँ पे अगर आया कि हर केस में p लेस देन q ही आ रहा है या फिर इक्वल टू q आ रहा है, ग्रेटर देन कभी नहीं आ रहा है, तो हमेशा आंसर क्या, इज p ग्रेटर देन q? नो इट इज नॉट. तो आंसर दिया ना मैंने तुम्हें. मैंने तुम्हें वो रखा कि यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. नो, आई गिव यू स्पेसिफिक यूनिक आंसर. दैट आंसर इज नो, इट इज नॉट ग्रेटर देन q. ठीक है. नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट्स नाउ. फोर्टी सेकेंड्स में आंसर आया तुम्हारा. गुड. दिस इज नॉट एन ओल्ड क्वेश्चन, दिस CSC 2022. यस, 1 minute डन. चलवा. यस. क्वेश्चन देखो, व्हाट आर टू नंबर्स. द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट टू नंबर्स, x and y sum. First statement, the product is 21, x into y is 21. Second, x plus y is 10. Two equations, two unknowns, can we solve? But both the equations are needed. One equation is not enough. So both the statement will be needed. So answer is C. Straightforward. Two variables है ना, there are two numbers. हाँ,
हाँ, नो 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 नो, यू डोंट हैव टू सॉल्व, दिस इज सफिशिएंसी, दिस डेटा सफिशिएंसी, कैन वी सॉल्व, इट डजंट मैटर व्हाट इज द आंसर। आ रहा है तो ठीक है, बट हाँ, कैन, हमें क्या चाहिए होता है, लेकिन वी वांट टू आंसर इट यूनिकली, क्या कोई और नंबर भी है, ये कैसे पता चलेगा फिर तुम्हें, ये ऐसे पता चलेगा, तो तुमने निकाल दिया कि एक केस हो सकता है वो, जैसे कि 13 और 17 था ऊपर, तुमने 13 लेके, हाँ सॉल्व हो रहा है यार, सॉल्व, चलो सी, विल बी राइट आंसर देन। आप ऊपर वाले क्वेश्चन में आप ये 13 लेते अपनी साइड से, 13 प्राइम नंबर है, रिमाइंडर 1 है, 13 से सॉल्व हो रहा है, आंसर सी, कैसे वो सही होता, नहीं ना, बिकॉज दिस इज डेटा सफिशिएंसी, यू वांट टू आंसर यूनिकली, 17 के लिए भी सही होता, सो यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन यूनिकली, आंसर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर, हाँ ये तो ऑप्शन, ये तो 10 और 20 के बीच के प्राइम नंबर पूछे है ना इसको, हाँ हाँ ये तो करना पड़ेगा, हाँ, वेरिएबल ही नहीं है इसमें, कुछ क्या ही है, हाँ ये सवाल, ये लिनियर इक्वेशन बेस्ड है नहीं ना, दिस इज अरिथमेटिक बेस्ड, जब इक्वेशन बेस्ड कुछ होता है तब हम वेरिएबल को, वेरिएबल की बात करते हैं, हाँ यहाँ पे देयर आर टू नंबर्स दे आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, सो लेट देम बी एक्स एंड वाई, this is xy is equal to 21, x plus y is equal to 10, two equations, two variables, now we can solve uniquely, yes, आ भी गया, इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, क्वेश्चन देखो, among these four people which is the largest, four numbers, sorry, not people, numbers, हो गया निरंजन, हो गया निरंजन, हम्म, हमें बताना है which is the largest, first statement gives you r greater than p, r greater than q, but we don't know a comparison between r and s, so second statement, s is not the largest one, so r becomes the largest, so we can answer, so answer is going to be c, very simple, again it is not an old question, it's a CSE 2021 question, next, there is a 5-story building with floors from 1 to 5 painted using 4 different colors and only one color is used to paint one floor, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चन नहीं है, सिचुएशन है, what we want here is that we want to ensure that any two consecutive floors have different colors, अब ये एंश्योर करने के लिए कौन से स्टेटमेंट इनफ है ये बताना है, फ्लोर 5 है, कलर 4 है, एक कलर 2 बार आएगा एटलीस्ट, बट हमें क्या चाहिए कि जो रिपीटेशन जो हो रहा है ना वो साथ साथ नहीं होना चाहिए, तो टू कंसेक्यूटिव फ्लोर शुड नॉट हैव सेम कलर, हमें ये इंश्योर करना है, अब ये इंश्योर करने के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट चाहिए रहेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, अब हम ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से जाना ज्यादा इजी है,
ओनली 2 इज सफिशिएंट, ओनली 3, अच्छा। अलग अलग आंसर आ रहे हैं यार। हम्म। ओके, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? सेकंड एंड फोर्थ आर पेंटेड डिफरेंट कलर, मीनिंग दिस एंड दिस, बट दिस डज नॉट इंश्योर दैट इसका क्या कलर होगा, इसका ये कलर सेम हो सकते हैं, ये सेम हो सकते हैं, राइट? सो ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ओनली 3 सफिशिएंट। 3 इज फर्स्ट एंड फिफ्थ आर पेंटेड रेड, तो ये रेड है, ये रेड है, बट देयर इज नो कंट्रोल ऑन बीच वाले। ऐसा थोड़ी बोला कि चारों को चारों यूज करने ही है, करेक्ट? तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। 1 is not sufficient, but 1 with 2 is sufficient. 1 meaning this red and red, and 2 is 2 and 4 are painted in different colors. We don't know the color, but and plus let's see that C1, CC, C1, C2, different color. But here again we can use C1 or C2. That we have no control over as of now. Correct? हाँ. Oh, okay. 1 is different. Middle 3 floors are painted in different colors. ठीक है, different colors मतलब C1, C2, C3, but C1, C2 can be C1 and C2 can be red. That is no control, no? How about last option? 1 is not sufficient, but 3 along with 2 is sufficient. 3, huh? 3 is, this is red. This is second and fourth are painted in different colors, C1, C2. फिर से वही आ गया। हाँ 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 हाँ। लेट मी चेक द ऑप्शंस देन। ये क्या क्वेश्चन था? नहीं, स्टेटमेंट तो सही है, बट इस केस में है ना, तो फिर तो उसकी भी जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट 3 की जरूरत है फिर। फर्स्ट, अच्छा। वैसे तो इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट लग रही है टू गेट इट करेक्टली। नहीं मतलब, ये अगर आप ये आंसर कंसिडर करोगे,
थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ आर पेंटेड रेड। तो अगर लेना ही है ऐसा सब कुछ, मतलब एजम्पशंस, तो इसको रेड ले लो, इसको रेड ले लो, और बीच वाले तीन यू हैव टू हैव डिफरेंट कलर्स। एक ही कलर रिपीट हो रहा है। अगर इफ द कंडीशन इज दैट, आल्सो कंडीशन वी टेक फ्रॉम आवर साइड, कि देयर आर 4 कलर्स एंड ईच कलर हैज टू बी यूज्ड। ये बोला है क्या कुछ? तो ये तीनों डिफरेंट कलर से आएंगे रेड से, ऐसा अगर अज्यूम करो तो ओनली स्टेटमेंट 3 इज इनफ, कि फर्स्ट एंड फिफ्थ रेड है, बीच वाले तीन कुछ और ही होंगे। रेड कैन नॉट बी यूज्ड 3 टाइम्स, मतलब अज्यूम करना पड़ेगा कि एवरी कलर हैज टू बी यूज्ड। 4 कलर है, एवरी कलर हैज टू बी यूज्ड। हाँ, हाँ, तो दिया नहीं है बट वो अज्यूम किया गया, बिकॉज ऑफिशियल आंसर इज बी। हम्म, दैट ये 4 कलर जो है ना, देयर आर 4 डिफरेंट कलर्स, दे आर यूज्ड, पेंटिंग तो हुआ है उससे, वेस्ट नहीं किए गए हैं। हाँ, हाँ, ये तीन बीच में ही आएंगे अब ऐसे। So that is why they are assuming that these are all 4 colors are being used to paint a floor. So answer is B, official answer, उस हिसाब से। ठीक है, लेट अस डू कॉम्प्रिहेंशन। एक ही है, कितने हैं? 2 है। हाँ, ओके, फाइन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, गुड। हम्म, टाइम अप। अजिंक्य डी। अच्छा, अश्विनी, व्हाट इज योर आंसर? Okay, we have hard work ahead. There is no resting for any of us till we redeem our pledge in full. In fulfill, we make all the people of India what destiny intends them to do. किसका लैंग्वेज लग रहा है ये? Who do you think is the writer? कुछ, we have hard work, no resting till we redeem our pledge. India, what destiny intends them. Hmm? Guess work. नेहरू का लैंग्वेज नहीं लग रहा क्या? है। यस, वो पढ़ा आपने, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी सुना होगा स्पीच। Destiny, tryst, redeem our pledge. It is the time that we redeem our pledge. It is from that same passage, PYQ. We are citizens of a great country on the verge of bold advance, and we have to live up to that high standard.
Okay. All of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India with equal rights, privileges, and obligations. We cannot encourage communalism or narrow mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or action. Simple enough. Nothing that is new to us. That we already know. Constitution ये सारी बातें करता रहता. The challenge the author of the above passage throws to the public is to achieve high standard of living, progress and privileges. No, privileges की तो कुछ बात नहीं है. Equal privileges, fulfillment of destiny and political tolerance. Again, privileges की कोई बात नहीं करी गई है. Spirit of adventure and economic parity. No. Hard work, brotherhood and national unity. This is the best answer. Official answer is also D. You have not read Nehru then. Yes. If you imagine, if you put him yourself in his shoes, the country as it was 70 years back, and you have to lead it, it's not an easy job. The things he could manage to achieve with that scarce resources. पहला बजट अपना क्या साइज था पता है? आज अपने बजट का साइज क्या है? इकोनॉमिक बजट का जो ईयरली आता है. नहीं, वो तो जीडीपी है. जीडीपी नहीं, बजट. बजट. व्हाट इज आवर बजट टुडे? समवेयर अराउंड 30 to 40 लाख करोड़. उस टाइम पे बजट था 2000 करोड़. एंड यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स. देयर इज नथिंग विथ यू. ब्रिटिश हैव लूटेड यू फॉर 200 years एंड सो मेनी चैलेंजेस. हर जगह पे चल रहा है. कम्युनिकेशन नहीं है. यू डोंट हैव दैट मेनी रिसोर्सेस. कश्मीर में चल रहा है वॉर. इट्स 1.5 साल तक वॉर चलता रहा वो. इट्स नॉट एन इजी थिंग टू मैनेज वॉर. हाँ, फूड नहीं है. वही पॉवर्टी है. 16% ओनली पीपल. लिटरेसी 16% है. पॉवर्टी इज मोर देन 70%. इट्स वेरी हार्ड जॉब टू डू. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है. इन फर्स्ट 2 डेकेड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ी है. उतना एग्रीकल्चर ग्रोथ हमने कभी अचीव नहीं किया. फिर बेस कम था ऑब्वियसली, बट स्टिल रिसोर्सेज भी तो कम थे. कुछ नहीं था. इट्स इजी टू क्रिटिसाइज समबडी सिटिंग 70 years after. It's difficult to put ourselves in their shoes. कौन सा? कश्मीर की सिचुएशन ही डिफरेंट थी. हम एक वॉर नहीं चल रहा था वहां पे. 565 प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में. अरे आर्मी का स्ट्रेंथ भी तो देखो. आर्मी ऐसे डिवाइड इक्वली नहीं हुई थी. नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते. वो कौन डिनाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा. किसने चूज किया था? तो वैसे नहीं हुआ था. इट्स लाइक कि नाउ अगेन डिफरेंट क्वेश्चन. ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप के लिए पटेल का इलेक्शन हुआ था. दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ द क्लास, बट आई डोंट नो should we go into this or not. But anyway, it was like ki, if you have to choose a prime minister between Vajpayee and Advani, Advani has the whole over organization. Vajpayee is the people's person. Who will be prime minister? Of course Vajpayee, because he is the people's person. Nehru had to be PM. Patel was 70. Age expectancy, life expectancy क्या थी उस टाइम की? And anyway, Patel died within 2 years of independence. हाँ हाँ नहीं, बट वो भी तो कंसिडरेशन था ही ना. एक no, there are many factors, other factors. अरे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपको ये आंसर्स लिखना भी पड़ सकता है. प्लीज डोंट गो विद दैट वन डायरेक्शन जो आप पढ़ते हो इधर उधर. वो एक साइड होती है. देयर आर मेनी अदर पॉइंटर्स. ऑफ कोर्स एक चीज से वॉर नहीं होता यार. वॉर बहुत बड़ी चीज होती है. देयर आर ग्लोबल फैक्टर्स एट वर्क. देयर आर डोमेस्टिक फैक्टर्स एट वर्क. यहाँ पे पूरा इंटेलिजेंस फेलियर था वो एक तरीके से. दूसरी तरफ वहां पे एग्जैक्ट मोमेंट चाइनीज लोगों ने तभी वॉर चालू किया जब वहां पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रहा था. इट इज नॉट एज सिंपलिस्टिक एज इट साउंड्स. दिस इज आल्सो पीवाईक्यू आई थिंक. नहीं मेंस में भी लिखना पड़ सकता है. इफ यू आर आस्क्ड 62 वॉर के रीजंस वगैरह, यू कैन नॉट जस्ट राइट कि नेहरू वाज एट फॉल्ट. यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स. नहीं वही तो वो नहीं था. मैं वही बोल रहा हूँ. ओके.
छोटा सा है, दिखने में आसान। हम्म। अच्छा, so you study a lot about Rousseau. ओके, यस, निरंजन हो गया। टाइम अप, बताओ। The individual, according to Rousseau, puts his person and all his power in common under the supreme direction of the general will, and in our corporate capacity, we receive each member as an individual part of the whole. So, individual will put his power. Rousseau said that, Rousseau says power is collective power is being put into the uh, supreme direction of general will. General will is a common will, common kind of will of the people. And in our corporate capacity, we receive each member as an individual part of the whole, and we become part of the whole when we cede our powers, individual powers, to a general will. We become part of the whole. In light of our passage, the nature of general will is best described as A, sum total of private wills of individuals; B, what is articulated by elected representatives of the individuals. Okay, the passage does not talk about elected representatives, it is just talking about general will. It may be in the form of electoral representatives, or it may be some other format. We don't know that. C, the collective good as distinct from private wills of individuals. And D, the material interests of the community. Again, C, B and D can be easily eliminated. You will might be confused with A and C. Hmm? It is collective good. It's not just a arithmetic sum total of private wills. It is about collective good, which is different from private wills. So your private will is something, you cede that will, cede that power to a general will, and you become part of the whole. So collective good, which is distinct from your private wellness or private will. That is the answer. Official answer is also C. Most of you got it correct. So we are done with data sufficiency. As you can see, last question, 2019 se pehle data sufficiency question were not being asked. Before 2019, data interpretation questions were asked. 2019, they have shifted to from data interpretation to data sufficiency. And from there on, we are getting these type of question, data sufficiency question in large numbers. At least 6, 7, 8 questions get asked every year. So this topic becomes important. No new knowledge is required, but just the different application of same knowledge. Tomorrow we will cover remaining topics, which is data interpretation and some small topics like decision making, which have been mentioned, decision making and some interpersonal skills. So some other examination do ask these kinds of topic. So I have given you one booklet just to show you the sample questions. उसके बाहर तो नहीं आएगा, वैसे तो नहीं आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, डिसीजन मेकिंग वाला भी नहीं आएगा, बट स्टिल वी विल कवर इट. डेटा इंटरप्रिटेशन आई वोंट बी एबल टू कवर ऑल द पीवाईक्यूज इन क्लास. अगर वो चाहिए तो फिर रिवीजन क्लास नहीं होगा, आप चूज कर लो. We have 2 classes tomorrow and the day after. Either we can cover and Sunday you guys have test and all, no? Yes. So if you want revision class, then we will finish both the booklets tomorrow. Whatever remains, you will do it on your own. Question वैसे भी नहीं पूछा जाएगा या फिर जा नहीं रहा historically. Let us see what we can cover tomorrow. Saturday then we'll have a revision class. Whatever I feel important, I will cover it. If you want any particular topic to be revised, particular topic का ये मतलब नहीं है कि PNC रिवाइज करवा दो पूरा. हाँ
हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक हम्म, मतलब आउटपुट इनपुट रेशियो हाँ उसमें फाइन फाइन, थोड़ा सा ओवरऑल ओवरव्यू दे दूंगा कि हर टॉपिक में हमने क्या मेन चीज पढ़ी थी। यू कैन देन आपके क्लियर रिकलेक्शन हो जाएगा एक तरीके से, एंड देन इट्स अप टू यू टू प्रैक्टिस एंड सॉल्व मॉक टेस्ट। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के लिए यू नीड टू सॉल्व मॉक टेस्ट। एक हम संडे को ले रहे हैं, यस विल हैव सीसैट टेस्ट 4 ऑन संडे। यस, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, नहीं उसमें ज्यादा सेक्शनल टेस्ट है वो, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दीज टॉपिक्स लाइक सिलोजिज्म्स एंड ऑल। हाँ दिस कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay then, we'll meet tomorrow. Have a good